टीवी जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें जहां जोश भी है जहां होश भी है जहां क्रिकेट है आओ देखें क्रिकेट टीवी। Hello, and welcome back to Cricket TV. And honestly, IPL 2026 ka points table, the top four race has officially begun. Yesterday, we saw a blunder of performance from GT and SRH. It showed like SRH was winning at one point, and then the script flipped. Nikhil sir, what do you have to say? It's in line with the, I think, consistency, not the skill. बट आई थिंक अगर आप पहले जितने भी आईपीएल की टूर्नामेंट्स हुए हैं जहाँ पे एसआरएच ने दिखाया है कि अच्छी टीम है वो, लेकिन कंसिस्टेंसी के फ्रंट पे इट हैज बीन द मोस्ट इनकंसिस्टेंट टीम आई थिंक इन द होल फ्रेंचाइज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नया नहीं है, पहले से ही है, जब से डेविड वार्नर भी थे उनके साथ और अलग अलग जो दिग्गज लोग थे उनके साथ। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से एक समय केन विलियमसन भी उनके साथ थे। तो बहुत ही कभी बढ़िया खेलना और फिर बहुत ही बेकार खेलना, ये इनके सॉर्ट ऑफ इतिहास में है। अब क्यों है ये पता नहीं, शायद उनका फॉर्म ऐसा है। दे आर वेरी नेचुरल प्लेयर्स, इंस्टिंक्टिव प्लेयर्स। दीज आर नॉट प्लेयर्स हु हैव बीन trained to become good players. If you see Abhishek Sharma, if you see Pat Cummins, if you see, these type of players are not, they are born cricketers. They play instinctively. They don't go according to logic, कि अभी आप स्लो करो, अभी आप फास्ट करो। नहीं, उनको जो आता है जिस तरह से खेलना उस तरह से खेलते हैं। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा वहां पे जो उनको जो मेंटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है मैच की स्थिति देख के किस तरह से कैसे अप्रोच करना है, वो नहीं करते हैं। इसलिए जीतते भी है, यानी सिर्फ हारते नहीं है उसकी वजह से जीतते भी है। कि जो मैच कभी आपने सोच भी नहीं कि जीत सकते हैं, वो भी जीत जाते हैं। और कभी जो मैच आप कभी सोच भी नहीं कि हार सकते हैं, वो भी हार जाते हैं। तो ये शायद एक एक जो जो एकदम नेचुरली टैलेंटेड क्रिकेट टीम है, जिसमें ज़्यादा किसी नेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपना एक एक इंस्टिंक्टिवली खेलते हैं, ये इनका एक हॉलमार्क हो सकता है शायद। मैं नहीं जानता, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, सो आई एम नॉट सरप्राइज ऑनेस्टली। And GT, on the other hand, is more methodical. If you see the players over there, whilst they're obviously all talented, they all have come up the hard way, hard working, net practice, honing their skills, and so if you see a Shubman Gill, or if you see a Rashid Khan, if you see all these players, they didn't come as super players. They grew up, they evolved and became what they are. So, and I think Rabada's and Jason Holder. Holder's performance yesterday was outstanding, brilliant, and they're known to do that. So they do that, even on dead pitches. So when the pitch helps them, they can do a lot of stuff. So consistency is the hallmark of GT. Inconsistency is the hallmark of SRH, and probably that's what I said at the mid. If you remember at the mid tournament review, that GT was at number 6. I said if there's one team that can break into the top four, is GT, because of two reasons, three reasons rather. You know that Shubman Gill he's a decent captain. His head on his shoulders will lead the team well. I think that factor comes into play. The second is that they are very consistent in their approach, and the third is the skill sets that they have. They have a great bowling attack. So I think all these things put together have brought GT back into now they're right on top of the table. I don't know whether they'll remain there for too long, but as far as being in the top four is concerned, I think it's a given. I don't see them being now losing the next two matches, the three matches that they have. I think they will win one and seal their place, because do have a great momentum behind them. So that's my take. This is just what sheer inconsistency of SRH, and honestly not surprised. I told you, I think, if we when we were Yes. talking, I think, well, informally, that SRH, even now, even today, I am saying that probably they will drop out, and they'll be pushed out by either an RR or a CSK, or never know.
Narayan sir, for SRH to collapse like this at 86, losing was still fine, पर ये 86 में जो collapse हुआ उससे उनके net run rate को भी काफी फर्क पड़ा. So now the pressure is on SRH moving forward in this tournament. How do you see them playing out? तो अपने टूर्नामेंट से स्टार्टिंग से एक पॉइंट हमेशा अपन ने एम्फेसाइज किया है कि एसआरएच की बॉलिंग अच्छी नहीं है, नंबर वन। इसलिए उनको 240 250 रन जरूरी है बनाने के लिए, इन केस दे आर बैटिंग फर्स्ट बेसिकली। सो कल क्या हुआ कि उनकी बॉलिंग भी बहुत पुअर रही। मलिंगा को बहुत 45 रन से ऊपर रन दिए गए। खाली एक कमिंस थे कैप्टन जिन्होंने कुछ 20 रन दिए, बाकी नहीं दिए। और जब टॉप ऑर्डर की बारी आई तो आप देखो तो ट्रेविस हेड 0 ऑफ 4 बॉल्स, अभिषेक शर्मा 6 ऑफ 4 बॉल्स, एंड ईशान किशन 11 ऑफ 7। तो जब इनके जो टॉप थ्री है, हेड, अभिषेक और किशन, अगर वो दोनों तीनों मिलके 17 रन मारते हैं तो मेरे ख्याल से गेम ओवर हो जाता है वहां से। हालांकि टारगेट ज्यादा नहीं था, देखा जाए तो 169 वॉज नॉट बिग टारगेट एज सच, लेकिन क्या होता है वहां से वो टीम संभली नहीं। और इनके जो एक मजेदार बैटर है क्लासेन, जो कि मिडल में आते हैं और जम के बैटिंग करते हैं, उनका भी कल एक जो पावर हाउस होता है वो दिखा नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने कुछ 14 मारे 16 गेंदों में, स्ट्राइक रेट भी बिलो 100 रहा। तो और वो भी 11 ओवर में जाके डिस्मिस हो गए। तो उसके बाद मेरे को लगा नहीं कि कोई एक शीट एंकर था जो इनको 169 तक ले जाता है एक्चुअली, नो। सो कोई पार्टनरशिप सब्सटेंस की बनी नहीं। हाईएस्ट स्टैंड वाज 24 अगेन, क्लासेन का और सलील अरोरा का। तो 24 इज नॉट, व्हेन यू चेज 169 इतना बड़ा इशू हो जाता है नहीं है। मतलब अगर आपकी, यू रिक्वायर अ मिनिमम पार्टनरशिप ऑफ 50 और 60 टू चेज दैट 169, दो ही उसमें बढ़ता है। टीटी का तो अभी निखिल ने जैसे कहा कि what went right from them was those Sai Sudarshan and Washington Sundar, the South guys, they played excellently well, कल साई ने गेम वन एंड स्टेट टू द लास्ट, पूरा का पूरा 20 ओवर कल खेला हुआ, 61 बनाए 44 में, एंड ही वाज अ शीट एंकर। अच्छे पार्टनरशिप भी बिल्ड की देखा जाए तो, निशांत सिंधु के साथ 38। निशांत सिंधु वाज एक्सीलेंट यस्टरडे, अ स्मॉल केमो, लेकिन बहुत अच्छा मारा उसने। और उसके बाद में वॉशिंगटन ने भी 50 मारे 33 के। दिस वाज सो दोज दे प्लेड वेरी गुड। एंड लास्ट लास्ट में आके होल्डर और टेवाटिया ने भी अच्छे मार दिए 15-20 रन, तो उनका स्कोर अच्छा हो गया, 168 तक गाड़ी पहुंच गई। और बॉलिंग में तो क्या कहना, निखिल ने अभी कहा, होल्डर और रबाडा एक्सीलेंट। सिराज ने पहला ओवर डाला, मेडन डाला, एक विकेट ली उसके अंदर, सो हेड की। सो दिस वाज हाउ द टेम्पो वाज लेड। एंड एनआरआर का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसके अंदर। एक तो टॉप पे चल रहे थे, अभी नंबर यू नो आरसीबी नंबर 2 पे आ गए बिकॉज ऑफ दिस जीटी विक्ट्री। एंड जीटी आई थिंक विद दिस 16 पॉइंट्स दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स। Yes. So the Uh, impact player rule is showing how well you use the impact players becoming critical in this series. Hetvi, if you see, DC has always messed that up yes. because they collapse when it's batting. Then what happens is even before the bowling starts, the impact player becomes a batsman and you throw out a bowler. And so when you bowl, it becomes a very weak bowling team. If you see GT, it has utilized this very well. Look at the bowling lineup, and that largely because of the impact player rule. They're four of the best pacers in the team. You cannot have four pacers in a T20 original 11. Not possible. At the most three. Look at them. Mohammad Siraj, Rabada, Holder, Prasidh Krishna. Four of the best in the business. That is possible because Krishna comes as an impact player, Prasidh. Because whenever GT is bowling second, that time, or when he's bowling, when they're bowling first, he goes away as a a substitute for the next impact player. So this ability to use that impact player rule well and ensure that you get the maximum out of the 12 players is something that Shubman Gill has done very well. Shubman Gill and his team, I think, and I think Ashish Nehra their coach, is their coach. I think that ability to do that is making a difference in winning and losing. I think this is where team like DC have suffered, unfortunately, and they have messed that
thing up because of a panic situation and doing things that should not be done. But I think a lot of importance that needs to be given to this thing. Maybe they should do away with it because I think unfair advantage in actually to some teams. I'm not very sure whether you want to have a 12 member team and change the entire way cricket is played. That's why I think it's not being adapted at the international level yet. We're still seeing it only in IPL. It's not there in the World Cup or any of the international tournaments. But very well played, and the bowling attack with these four and Rashid Khan, unimaginable, brilliant. हितवी आप देखोगे ना तो अभी एसआरएच के पास में दो गेम्स है। हम्म। एक गेम है सीएसके का जो कि अवे गेम है, मद्रास में खेलना है, और एक है आरसीबी का जो उनको होम में खेलना है। अभी क्या हुआ है, आरसीबी के सामने तो वो 6 विकेट से पहले भी हारे हैं। फर्स्ट मैच, इनॉग्रल मैच उनका जो था वो ऑलरेडी हारे हैं, और सीएसके के साथ में वो जस्ट मार्जिनली 10 रन से जीते हैं। तो अभी इक्वेशन ऐसा हो गया है कि एसआरएच अगर दोनों मैच नहीं जीतता है, इट इज नॉन नेगोशिएबल एट ऑल। एक भी मैच हारा, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू Yes. व्हाट द स्टैंडिंग स्टे टुडे Match. एक्चुअली। हाँ. बिकॉज देयर आर अदर टीम्स, जैसे निखिल बोल रहा है ना, वो सब जम मारने को तैयार है ना। Yeah. इवन अ केकेआर विनिंग और गेम्स कैन गो टू 17 एक्चुअली देखा जाए Yes. ऑन पेपर। सो ये एक टफ मैच रहेगा, सॉरी टफ कंपटीशन नेक्स्ट 2 मैचेस फॉर एसआरएच। So guesses, any guesses, Narayan? Will they win one or not? क्या बोल रहे हैं सर? Any guesses? Will they win one match or they will not? नो नो, दे विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। आई विल Maybe out नॉट of से the विच good. मैच। इतिहास तो यही बोलता है। इतिहास नहीं जो नहीं, आपने बोला वो इतिहास यही बोलता है। Yes. पाटीदार जीतने नहीं देगा, आप समझ के चलिए। आई I agree एग्री। with you. आरसीबी को बीट करना मुश्किल है। शायद सीएसके को बीट कर सके, शायद। अगेन देयर विद संजू बीइंग राइट देयर एंड ऋतुराज गेटिंग हिज एक्ट टुगेदर, there is a certain element of luck, or I would say momentum behind them. And I would back CSK to create an upset, honestly, the way they are playing and the way they are getting their things together with Noor, Akil and Noor, a combination of bowling. You don't know what's going to happen, boss. And I think that's the beauty of this last mile of this IPL, that you still don't know who are going to be the top four. And I think that is like a great suspense movie that आखिरी रील तक पता नहीं चलता है कि खूनी कौन है इसमें। तो ये जो मेरे को लगता है ज्यादा कुछ इन कॉन्सिक्वेशन नहीं है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। लॉट ऑफ यार प्रेशर जो रिजल्ट है वो 67 मैच पे निकल जाएगा अकॉर्डिंग। निकल जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है आज के दिन में। हालांकि फिर तो क्या, मैंने कहा ना आपको कि भाई ऑर्गेनाइजर शुड ओपन एंड थ्रो द डाइस, और ये बोलिए 4 टीम फाइनल में है, अपना प्ले ऑफ में है, बस हो गया काम। But my only last comment is that I think some teams deserve to be there based on performance. Some teams don't deserve to be there. So, for example, I don't think KKR deserves to be there. Honestly, they have not played a percentage game, so it will be a travesty of justice to see KKR being there in the top four. Honestly, uh, RR not being there, I think they would deserve not to be there again because of the inconsistency. Like a great team, but SRH and RR, I'm telling you, between the two, neither deserve to be there. RR is my favorite team, but they've been so inconsistent. They were last 3 4 games they just kept on losing, and ordinary games. Not that that they were like beaten comprehensively by a fantastic team and a super opposition. ऐसा कुछ नहीं था. You have to be consistent when you play. You have to be like GT. You have to be like RCB. PBKS again. If जीतेगा नहीं जीतेगा, कभी खेलते हैं अच्छे कभी नहीं. Only two teams that I think are consistent are RCB and GT, honestly speaking. These two deserve to be there. They should be there. बाकी तो is I think open for all. I mean बाकी सब none of the other teams actually deserve the third and fourth spot except that कि चलो बाकी सबने बेकार खेला तो मैं आ गया, वो ठीक है. PBK's owner is confronting the captain on the pitch itself, after the match. Oh. I didn't see that. I didn't see. Seriously, is it? But I think the They've played. captain won't mind. I think No, the captain problem won't was- mind being confronted by a lovely owner. That's okay. Yeah, No, problem that's is the captain replied in his language, तो उसको समझा नहीं कि क्या बोल रहा है actually. And captain has two languages, Madrasi and Marathi.
Yes. And the owner knows none of it. Neither. We'll take this up Yeah. when we do the points review. So Yeah. Yeah, on yeah, this. let's get on to it. Let's start with that. कल के बाद तो जीटी टॉप पे आ गया. आरसीबी आज का मैच जीत जाएंगी तो again they'll be 16 points, almost qualified like Nikhil sir just said. SRH on third, Punjab at 13, quietly sitting like nobody's noticing them. काफी मैचेस हारे हैं अभी उन्होंने, but I think they'll make it to top 4, followed by CSK and Rajasthan. There's no point in discussing DC KKR then. So in the end, this wasn't Gujarat Titans winning another game. This felt like a message to rest of the league. SRH, loss will hurt them beyond just 2 points. The net run rate damage, well, that will affect them, that will add pressure. But the scary thing is also that, well, they are explosive. One explosive night and they can make everyone forget this result completely. That's why the playoff race is still wide open. Stay tuned with us, and we are discussing the points table. GT lives this match looking stronger than ever. They are playing lower half of the table in their next games, and they'll be more comfortable going to top 4. So watch very carefully. We'll see you next. Like, share, and subscribe. This is Cricket TV, all things cricket and more. Thank you. आओ देखे क्रिकेट टीवी जहां मिलेगी क्रिकेट की सारी बातें जहां जोश भी है जहां होश भी है जहां क्रिकेट है